friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, we are here for you again, and as you are aware that today we are talking on mental health. We are discussing different perspective, different points why your mental health is very, very important, how you need to take care about your mental health, because if you are mentally sound, mentally good, then it becomes easier for you to do whatever you want to be in life. Dear friends, for this discussion, we have with us in our studios Miss Anjali Kaushik. Miss Anjali Kaushik is a career counselor, a parenting coach, a psychologist. She's working with the Bal Bharti Public School. And friends, we believe that your queries are important for us also, because we wanted to know what do you think about yourself. So if you have any question pertaining to the topic, feel free to talk to us. Our number is 1800110430. Our number is 1800110430. Now let's welcome our guest, Miss Anjali Kaushik, once again, and let's try to have more and more input through her, because we believe that she's going to change your life. It is always Yes. said that someone's small quote, a small word, a line sometimes changes our life. And we believe that our sessions are conducted for our dear friends only. So let's take maximum benefit out of it. Ma'am, we have discussed about how mental health is important, what is required to be done and what needs to be done. That is also the important thing. Now, those kids or those children who are preparing for their careers, because when you reaches 9th standard, at most 9th standard, you start thinking, आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, what subjects are to be opted, because at that time you are preparing yourself. I need to be this, I want to be this. Even the parents knows कि बच्चे से आगे क्या करवाना. Though we would be discussing on what parents thinks, but before that, जब हमें पता है कि मुझे आगे क्या करना है, उसके हिसाब से मुझे अब तैयार करना है अपने आप को. इतना टाइम आप 8 hours मैक्सिमम आप स्कूल में कंज्यूम करते हैं, घर आके सेल्फ स्टडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन. बट इफ एज अ चाइल्ड आई एम इन्वॉल्व्ड इन सोशल मीडिया, और इफ आई एम इन्वॉल्व्ड इन अ गेमिंग काइंड ऑफ थिंग, वेयर इज द टाइम टू स्टडी? देयर इज नथिंग लेफ्ट. True. At least 6 hours it is said, but 8 hours of sleep is very, very mandatory to have a good health, both mentally as well as physically. True. So for those kids, what do you want to say? I would say that when you're in grade 9th, your priority should be making a career. If it hasn't set in till grade 9th, it is high time you started thinking about making career choices, getting the right career-based information, deciding what stream to take and where will I be 5 years down the line. That is what one child should start ideally thinking. अगर बच्चा ये नहीं सोच रहा है, तो either the child doesn't want to make a career, or he or she probably has some family business that he will probably be running, and he is not pressurized to make a career. But those who really are willing to put hard work in should definitely make sure that there are not as much distractions as there are really prevailing. So there will be distractions, but you have to set a goal very clear in your mind. Once your goal setting is clear, you are prioritizing studies, and you know where you want to be down the line 5 years later, let's say 10 years later, I think nothing can stop you. So be it the social media, be it relationships, be it your friends, anything. Those who are really dedicated and hardworking students, you will see they are very focused, they are balanced. No matter how many distractions, they do know where and when to stop and how much to get into any distraction. So I think it's about goal setting that must happen around class 9th and 10th. And when you are focused, nothing comes in between you and your dreams, whether it's a social networking site, your Definitely friends. not. है ना? Everything's become vague. But then again, वो dream instill करना हाँ. parents का काम है. कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि हमने शायद बच्चे को ड्रीम दिखाया ही नहीं. हम वो भी तो करेंगे ना. बिल्कुल. And the child, if you will see so many children around class 11th and 12th, they don't know what they want to do with their lives. So that aimlessness that's present is because have the parents never talked to him? Or have you never really gotten him to discuss where you want to go? So he needs that discussion, what he wants to do with his life. And I'm sure any child who's clear on his goals will never get distracted enough.
That is for sure. सपने दिखाने जरूरी हैं और सपने दिखा दिए और अगर बच्चा उड़ने के लिए तैयार है तो कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आएगा. कुछ भी नहीं है. हार्ड वर्क इज डेफिनेटली अ short way to success. Maybe not at one place, maybe another place. Maybe plan A doesn't work, so plan B will work. If plan B doesn't work, plan C will work. But he will definitely find success wherever he is going to get into. मैम द अदर साइड ऑफ द कॉइन सेज कुछ बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर लेते हैं इट इज एज इफ देयर वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड अगर उनको वो चीज नहीं मिली या वो जो एस्पायर कर रहे हैं व्हाट एवर दे वांटेड टू बी अगर वो नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. फॉर देम व्हाट इज द की टू सक्सेस. कैसे कोप अप करना है उस कि नहीं मिलेगा जरूर इवन इफ यू फेल यू हैव अ सेकंड प्लान. कैसे तैयार उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है क्योंकि मेहनती बच्चा बहुत ज्यादा है बहुत मेहनत करता है बट कहीं ना कहीं वो डिलेमा में है कंफ्यूजन है इतना प्रेशर ले लिया है कि अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लिया है जिसकी कोई हद नहीं है. सो फॉर देम व्हाट डू यू वांट टू से. अगेन आई वुड से हियर वो जो ड्रीम दिखाया है वो किसने दिखाया? मदर फादर ने. बच्चे ने खुद नहीं देखा होगा. उसको इंडोर्स किया है पेरेंट्स ने. अगर ड्रीम पूरा नहीं होगा तो ये भी किसने बताया है? पेरेंट्स ने. कहीं ना कहीं हमने ही बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर जनरेट कर दिया कि वो जी जान लगाएगा टू फुलफिल द ड्रीम और नहीं हो पाएगा तो शायद सुसाइड भी कर लेगा. सो व्हाई आर वी जिसे कहते हैं ना हम अपने अरमानों के लिए बच्चे की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं बट हम पेरेंट्स ये कर रहे हैं. दैट्स द सैड पार्ट. सो देयर विल बी चिल्ड्रन हु विल नॉट सक्सीड इन देयर प्लान्स बट देन killing themselves or doing suicides or attempting suicides or wrist cutting, things like that, self-harm happens when parents have pressurized the child to reach where the dream was probably the parents and not the child's. तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को समझने की भी जरूरत है कि क्या हम बच्चे को इतना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि वो जी जान लगाएगा. डू और डाई सिचुएशन हमने ही तो नहीं बनाई उसके लिए. दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट. वेरी ट्रू. हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो चाहते हैं हमारा बच्चा वो करेगा बट लेट्स हैव अ परफेक्ट बैलेंस. और अगर नहीं भी करेगा तो कुछ और तो करेगा. एक्चुअली वी हैव स्टॉप्ड मेकिंग हैप्पी ह्यूमन बीइंग्स. बीइंग पेरेंट्स हम सिर्फ अपने बच्चे को एक रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं. वी वांट द रोबोट टू डू दिस थिंग या वी वांट द रोबोट टू वर्क लाइक दिस बट वी हैव स्टॉप्ड मेकिंग आवर किड्स द हैप्पी चिल्ड्रन द हैप्पी ह्यूमन बीइंग्स. Probably again I would now link this to, are the parents happy themselves? Very true. Happy parents will bring up happy children and unhappy parents will rub off the unhappiness to their children. So most of the mental health concerns when it comes to children, adolescents, teenagers, youth, check out family ka dynamics affected hai. Very true. I have another important question pertaining to this. But before we go to that question, another question is regarding the career choices. Though you have explained how parents pressurize. अब एक ऐसा stage आता है life में जब आप अपना 12th करने के बाद, because it is always said making right decisions at the right time. If the decisions are not taken at the right time, it will affect your entire life. Totally. Now, kids भी, बच्चे भी और parents भी कहीं ना कहीं pressure होता है. नहीं, यही करो. बच्चा कुछ और करना चाहता है. He is comfortable in some other thing. He has perceived himself or herself in a different frame. Now at that time, who is to be there कि वो उस ब्रिज को कम कर दे, उस गैप को कम कर दे. क्या पेरेंट्स को समझना होगा या बच्चे को समझना होगा कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है? Because nobody can be wrong, nobody can be right. Now who is to take the lead? The question is because कहते हैं कि जो भी काम हम वो हाफ हार्टेड कंसेंट से करते हैं ना वो मैक्सिमम हमारे पूरे नहीं होते हैं. या तो फिर वो अधूरे हमें प्राप्त होते हैं या फिर हमें प्राप्ति नहीं होते हैं या फिर हम जिंदगी भर उनके साथ रोते चले जाते हैं. क्योंकि मैंने कहा जैसे कि वी आर नॉट इन टेंडेंसी टू मेक हैप्पी चिल्ड्रन. और हैप्पी चिल्ड्रन शायद तभी होंगे जब हम वो करेंगे जो हम दिल से करना चाहते हैं. और मैं अपने पेरेंट्स को और बच्चों को सदा कहती हूँ दैट आप जो भी काम करेंगे ना शिद्दत से करिए. You will automatically be happy. And Confucius has said, work should feel like work, then it's not the right work. So if you do work which doesn't feel like work and you're passionate about it, तो आपको काम नजर नहीं आएगा. पर शायद हम बच्चों को ऐसा नहीं कह रहे हैं. हम बच्चों को कह रहे हैं कि वो कर लो जो हम आपको बता रहे हैं. या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. फिर चाहे तुम इंजीनियर बन के कुछ पैसा ना कमाओ और शायद टीचर ही बन जाओ या तुम एक लॉयर बन जाओ या सिर्फ बीए ऑनर्स में फिर से प्रोग्राम में एंट्री ले लो. वी नो काउंटलेस केसेस वेयर चिल्ड्रन हैव बीन फोर्स्ड टू टेक अप इंजीनियरिंग and they have turned out to be complete losers. But
दैट्स प्रॉब्ली द पेरेंट्स विश, एंड बच्चे ने अपनी बलि चढ़ा दी, पूरे ईयर्स वेस्ट कर दिए. एंड इफ यू लुक एट दीज पीपल हु, आई मीन इफ यू लुक एट एनीबडी on an average scale, 30 to 40% of workers in the workforce today are not very happy in what they're doing. And you know why is that? Probably because हमें भी शायद पुश किया गया था, शायद अपनी मर्जी से नहीं आए थे. और आप चेक कर लीजिए, जितनों की भी जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल्स लो हैं, वो शायद अपनी मर्जी से थे ही नहीं उस करियर के लिए बने. सो आई ऑलवेज टेल, हर कोई किसी पर्टिकुलर करियर के लिए बना है. उस बच्चे को ढूंढने दो, व्हाट इज ही मेंट फॉर, हिज पर्सनैलिटी, his interest, his aptitude, the intelligence levels. If you check all that, he's definitely suited to some careers. We need to guide him, facilitate him towards that. ना कि आपकी इच्छाओं के पूर्ति के लिए And it is also seen sometimes that people change their careers. Not always might be the reason कि वो forced उसमें थे, career में थे, but कुछ later, हाँ later उनको realize होता है कि no, I'm not for this thing. Yes. या मजा नहीं आ रहा है काम करने में. Spending so many years in a particular thing and you feel so I'm not for this kind of work, और मजा नहीं आ रहा है काम करने में. Totally. तो some of the cases इस category में भी शायद fall करते होंगे. बिल्कुल. कि आपने क्योंकि right decision नहीं लिया right time पर, अपनी दिल की आवाज नहीं सुनी, and now you're landing into a zone where you feeling no, and I'm not because all these years you kept on looking for that fulfillment. वो मिली नहीं, वो satisfaction अभी भी नहीं आ रही, and they are meandering and trying to find out where to go. And this is how is probably the story for more than 50% of people even today in the workforce. Very true. Very true. Now going back to that particular question, for which I am craving for because जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक family system जहाँ parents होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके personality को बनाते हैं, shape up करते हैं. Now the quarreling parents, they affect the mental health of the child, not for that particular period of time, but they are disturbed for the entire lives. Yes. उनकी खुद की lives आगे चलकर disturbed रहती हैं. They too quarrel with their spouses. So parents need to think about it 100 and 1000 of times. What do you say? कि आप बच्चे के सामने लड़ेंगे, आप उसके mental health को disturb करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसको वहीं तोड़ देते हैं. But sad part is that parents really cannot stop that fighting also. As a result, I understand when you get married, you will have fights, you will have arguments, but the only thing you can ensure is that don't fight in front of your children. Take time out, sort out your fights outside the house, in your room, but try and see if it is avoidable in front of the child. That's the way. Because we are into a family system, है ना? प्यार, गुस्सा, तकरार, ये बहुत genuine है. हमने अपने पेरेंट्स को, उनको भी छोटी या बड़ी बात पे कभी उन्होंने भी गुस्सा किया, but it has never affected in the sense कि हमारी mental health disturb हो जाए. हमने समझना शुरू किया कि एक marital relationship में ये छोटी मोटी तकरार होती है, but the families where the parents are, I mean, they are fighting like cats and dogs, there it is very difficult for children to cope up. वहाँ पर हम देखते हैं बच्चे बहुत एलिनेटेड से रहते हैं, या जल्दी जेल नहीं होते हैं, या उनकी टेंडेंसी भी खुद क्वारल करने की होती है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट एज अ पेरेंट. टोटली. क्योंकि जितना हमारा बच्चा खुश है, कहते हैं कि बच्चे को कभी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जो करते हैं हमें देख के ही सीख जाता है. नाउ जैसे कि हमने बात ही उठाई यहाँ पेरेंट्स की और हमारी टेंडेंसीज की, डू यू फील सो दैट पेरेंट्स आर नीडेड टू बी काउंसल्ड रेगुलरली? Definitely. हम हमेशा बात करते हैं बच्चों को काउंसल करो. We need to talk to the parents. बच्चों को काउंसल करो. बच्चा is simply representing the family system. He is simply representing who you are at home and what values you are instilling at home. उसका representation है बच्चा. बच्चे को change करने के लिए बच्चा मैंने change किया, that is just at the superficial level. मैं अगर change family में कर दूंगी तो बच्चा will automatically be okay. So healing the child, improving the child's behavior, automatically you work with the parents, it automatically gets improved. Very true. We need to think about ourselves first. Yes. What personality do we have? How are we really the role models? हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं. बाहर बच्चा हीरो, बच्चे कहते हैं ना, my father is my hero, my mother is my heroine. How? Because they have seen that environment in the house itself, कि उनको अपने पेरेंट्स में ही सबसे पहले अपने रोल मॉडल्स नजर आने लगते हैं. तो खुद को हमें पहले संवारना होगा. Only then we can think of to have the brighter future for our kids. And मैं तो कहती हूँ क्यों ना बने आप ऐसा रोल मॉडल कि बच्चे को बाहर देखने की जरूरत ना पड़े. बच्चा आपको देखे, आपको इम्बाइब करे, आपके वैल्यू सिस्टम इम्बाइब करे, एंड व्हाट बेटर देन दैट. एंड व्हाई नॉट?
इंस्टाग्राम से बेटर वैल्यू सिस्टम एनी टाइम आपके पास है. बिल्कुल. बस आपको ये सोचना है एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय दें जिससे कि वो कुछ सीखे आपसे. कुछ सीखे. We also have discussed about how these students from the rural India, they crack examinations very easily. What is the reason for that? Like I was sharing with you, Hindustan Times ki statistics hain that 50% of children who get into IIT, and they are the children mainly from non-Delhi NCR areas, which means generally from the rural areas of India, which means it's very clear they're not distracted. They don't have girlfriend, boyfriends. Not that it's not a norm there. They don't have these Instagram accesses. They don't have YouTube accesses. And even if they do have, it's very limited. And हमारे यहाँ पे बच्चे के पास सारा facilities है, all materialistic things available. As a result, the child is not concentrating on his goals. He doesn't have goals. There are so many children out here who are simply aimlessly wandering away and whiling away time in schools. और बच्चा जो रूरल एरिया का है वो शायद एक अरमान लेके आए, एक सपना लेके आए कि मुझे कहीं कुछ बनना है, जी जान लगाता है, डे 1 से लगाता है. होने तो डिस्ट्रैक्शंस हैं साथ में हैं, बट ही इज वेरी फोकस्ड. जब हमें पता है हमें तो ये चाहिए. I want to be this. I see myself in this frame and I want to get it. Yes. Now, because we have discussed a lot about this social media and social networking site, because the way they have captured us, it is the talk of the world, I should say. Because बच्चा हर शहर, हर राज्य या फिर देश विदेश एक जैसा है, क्योंकि हर बच्चे का टाइम सोशल मीडिया पे ज्यादा स्पेंड हो रहा है. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट कंसर्न, ये माना जाता है और ये कहा भी जाता है कि वक्त से पहले, उम्र से पहले कुछ भी सीख लेना गलत होता है. डू यू फील बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज द वे द कंटेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इट इज डिलीवर्ड ऑन द सोशल मीडिया साइट्स, इट इज सम वे और द अनदर बैड फॉर द किड्स, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है. सो डू यू बिलीव कि हमें सोशल मीडिया से इसलिए भी अपने बच्चे को दूर रखना है कि वक्त से पहले वो जो चीजें सीख रहा है उसे नहीं सीखनी चाहिए, दैट इज फॉर बैड? आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, आप पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं. दैट्स द ओनली वे बाय विच यू विल बी एबल टू स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम लर्निंग थिंग्स एट अ मच फास्टर रेट देन ही शुड आइडियली बी लर्निंग इट एट. बट ये हो नहीं पाता है. इन मोस्ट फैमिलीज इट्स एक्चुअली नॉट डन. एज अ रिजल्ट द ओनली वे इज you cannot prevent your children from that kind of an exposure. Wrong exposure at the wrong time and at the wrong age. हम नहीं रोक पा रहे हैं बच्चों को. हम क्या कर सकते हैं? Talk to them. Inform them the correct information needs to go rather than fake information. I always tell children, जो information insta, I'm not talking against the social media, जो information आपके social media पे है या तो वो 90% fake है या वो incomplete है. तो बच्चे को हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. वाई डोंट वी एज पेरेंट्स बिकम द फर्स्ट हैंड रिसोर्स फॉर चिल्ड्रन टू गेन इन्फॉर्मेशन? सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट जहां पे हमको लगता है ही माइट डिविएट, वी नीड टू टॉक टू आवर चिल्ड्रन ऑन अ रेगुलर बेसिस. That's the way out. That's the way out. But सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने टाइम को बचाने के लिए अपने बच्चे के हाथ में खुद ही फोन पकड़ाया हमने है. ये लोग, बच्चा जब सॉलिड्स खाना शुरू करता है तो हम उसको खाना भी फोन देकर कि बच्चा एटलीस्ट खाना खा लेगा. बट यू डोंट नो दैट योर चाइल्ड is being addicted from that particular age, क्योंकि उसके हाथ में फोन आ गया और एडिक्शन उसको 3 साल से, जब उसने या उससे कम उम्र से जब उसने खाना खाना शुरू करा है, तो he is used to or she is used to the. मैं कई बार कहती हूँ to parents that बच्चा खाना खा रहा है और फोन उसको खा रहा है. Very true. It's eating away. Very true. Our life, our time, and we as parents are failing to tell our children कि बच्चा तेरा precious time है ये. यही time है when you will carve out a life for yourself. And अगर ये time गया, you will not be able to carve out a life later. Exactly. You will be able to carve out, but definitely not as good as you can utilize the time today. Exactly. The time flies like a wind. Once it's gone, it's gone. It's not going to come back. हमारे वेदास में कहते हैं ना, 0 to 25 years ब्रह्मचार्य आश्रम means अपना एक करियर बना लो जीवन में, where you can earn a living for yourself. And 25 years के बाद go and get settled in life. So मुझे लगता है हमारे वेदों में बहुत अच्छे से बताया गया था, लाइफ को डिवाइड किया था. There was time for everything.
But in present context, our way of thinking has changed. जी लो जिंदगी, जैसे जी सकते हो बस जी लो. Westernization एक का ही impact जिंदगी है. है. That's But right. those who discipline their life, Yes. they generally have a longer life, a good life. They make beautiful lives. They make beautiful literally life. carve out beautiful lives. We have countless examples. Children who have dedicated themselves to a particular goal and have balanced themselves and concentrated themselves totally towards a dedicated focus, they have carved out beautiful, remarkable lives for themselves. Now, last but not the least, how to have a good mental health, specifically for the kids, for the students who would be watching or the parents who would be watching. What is your suggestion? क्या ऐसा करें कि हमारी mental health हमेशा अच्छी रहे? Because mental health अच्छी है, बच्चा happy go child है, things are easier. Nothing is difficult in life then. Mental health के लिए आपका बच्चे के साथ connection strong कर लीजिए. मदर या फादर और या दोनों के साथ है तो बहुत अच्छी बात है. आपके बच्चे का मेंटल हेल्थ कभी भी नहीं जाएगी कहीं भी टॉस के लिए. द सेकेंड थिंग इज, हम फिजिकल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मेंटल न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं. कोई नहीं बता रहा मेंटल न्यूट्रिशन क्या है. ईटिंग राइट की बात कहते हैं, पर ईटिंग माइंडफुली की भी बात करें. बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, पेरेंट्स खाना खा रहे हैं और सामने स्क्रीन चल रहा है, सो मूवी इज प्लेइंग ऑन. सो व्हाट आर वी टेलिंग द चाइल्ड कि खाना खाने के लिए है, mechanically it is not to be enjoyed. What is to be enjoyed? The screen. So हमारी mindful eating गायब हो गई है. That food which is supposed to nourish the body, the soul and the mind is no longer nourishing the mind. So हमें वो mindful eating लानी पड़ेगी in complete quiet silence and peace, and that is when it nurtures and nourishes your body. तो वो mindful eating लानी है, mindful living लानी है. बच्चों में कोई spiritual, religious, कोई भी एक आदत डाली where they can connect with that higher being. 5 minutes के लिए करे, 2 minutes के लिए करे तो सही. And before they go to sleep, वो जो mental chatter चल रहा है with the screens, वो बंद कर दीजिए. आपका बच्चा सो रहा है, आप भी सो रहे हैं, पर आपका माइंड नहीं सो रहा है. आवर्स एंड आवर्स मेंटल चैटर तो ऑफ ही नहीं किया. उसको ऑफ करने के लिए जरूरी है स्क्रीन्स ऑफ करो घंटा 2 घंटा सोने से पहले, एंड देन अ काम क्वाइट एनवायरनमेंट टुवर्ड्स ड्रिफ्टिंग अवे इनटू स्लीप. सो दैट stopping of the mental chatter must happen. Stopping of eating the right foods must happen. Eating mindfully must happen. Sleeping right must happen. And that strong connection with the family. Love. वो love missing है. So that love with each other, and love is not just about relationship, it's about mother, father, brother, sister, and that grandparents also, that close knit thing. It's like a shield. So whatever problems, whatever challenges that come across, I'm sure they are robust enough to handle it. Exactly. That is how we need to equip our children. हम ये नहीं कह सकते लाइफ में challenges नहीं आएंगे, but then make him robust enough to solve those conflicts, resolve those problems, and come out of it winning out of it. Very true. And the value system which our family gives us, the love which we get from the family, the parents, the grandparents, वो कहीं ना कहीं हमें build कर रहा होता है, और life में वो हमारा एक soulmate भी होता है, because it helps us out in understanding what is right and what is wrong in life. Totally. And it makes our way very clear one. So with this note, ma'am, thank you so much for giving us this wonderful session. There was a lot more to learn from you, and I believe that there are another thousands of questions still appearing in my mind, and we wish to have another more sessions like these, so that you and us could build a better future for the kids who are going to enter into the new world very soon. So with this note, thank you so much for your precious time. Dear friends, you can write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We would like to have your queries. You can give your suggestions, feedbacks also. We are going to meet next Thursday again, and yes, we are going to upload this lecture on YouTube for you. You keep watching us, keep writing us. Thank you so much.